That is also important, and it is a most simple part. Route of administration. Okay, you might have done with this route of administration in your college. The teachers they might have taught you regarding the route of administration, right? So what do you mean by route of administration? Route of administration होता क्या है? तो ये क्या है? It is a tool. It is the way through which you can administer or you can introduce a drug into your body. After all, a drug has to show its pharmacological effect. It has to change your physiology, and to change the physiology of your body, a drug must be in a body. So, drug must be in a body. It must be at a site of action. अगर ड्रग आपके बॉडी में आया ही नहीं, अगर वो साइट ऑफ एक्शन पे एक बार गया ही नहीं, तो एक्शन कैसे दिखाएगा? नाउ द रूट्स और द वे through which you can introduce a drug into your body or you can administer a drug in your body. So what are the different routes? So mainly there are mainly two routes. First one is nothing but the systemic route. First one is nothing but the systemic route, and second one is nothing but the non-systemic route. Now what do you mean by systemic route? Systemic route किसको बोलेंगे? Systemic route means this is the route in which your drug is going to circulation. So your drug is in a circulation. This is the route through which your drugs goes into the blood. That's why it is known as a systemic route. There are a lot of routes that they comes under the systemic route of administration. And drug after administration by systemic route will go into the systemic circulation. That's why it is known as systemic route. Now, what do you mean by non-systemic route? So, drug which is administered by this non-systemic route, it will not go into your blood. So, systemic route से अगर drug देंगे तो वो blood में जाएगा. Non-systemic route से अगर drug देंगे तो वो blood में नहीं जाएगा. वो that is only for local action, right? Now we'll see. Again, these route of administration they are divided into three types. First one is known as enteral route. First one is known as enteral route. Enteral मतलब क्या? Drug is given by intestine. In enteral मतलब enteron. Enteron means intestine. So enteral route or enteral route consists of a different route of administration. In that you have oral route. So it is also known as a per oral. P dot O dot. That is a per oral. So confuse नहीं होना है अगर किसी कहाँ पे अगर PO लिखा है उसका मतलब सेम ही है oral route, right? So drug is given drug is given by oral route. You are eating some tablet, for example, if you have fever, you are taking paracetamol, right? If you have some nausea, vomiting, so you are taking metoclopramide, etc., etc. So through a oral route, that is the oral route. Now rectal route is also considered under the enteral route because in the rectum or in the rectal route, through a rectal route, you are using suppositories or rectal tablets, etc., enema. तो आप इनिमा देते हो, टैबलेट देते हो, रेक्टल टैबलेट या फिर सपोजिटरी. लेकिन रेक्टम क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन. सो दैट्स व्हाई रेक्टल रूट आल्सो कम्स अंडर द एंटेरल रूट. देखो यहाँ पे so whenever you will take a tablet or capsule or any suspension emulsion liquid oral through a oral route, it will go into the intestine. So that's why it is known as an enteral route, right? So when drug is kept in a rectum in the form of suppository or in the form of rectal tablet or in the form of enema, so it will also undergo it. It is nothing but the rectum is a part of your intestine. So again enteral route. Sublingual route is also considered sometimes in an enteral route. Sublingual means you have to place a tablet below the tongue. Below the tongue. Actually, sublingual route, it may be enteral route or it may not be enteral route. Because sublingual route में क्या होता है कि आप जब tablet टंग के नीचे प्लेस करते हो, so whatever drug is absorbed through capillary network of your tongue, जीभ के नीचे जो कैपिलरीज है वहां से अगर ड्रग एब्सॉर्प्शन होता है तो वो डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा, डायरेक्टली ब्लड में जाएगा, वो इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा. लेकिन कुछ पार्ट होता है ना कि आप जो सलाइवा है आप निगल लेते हो, सो यू यूज्ड टू एनगल्फ दैट सलाइवा, सो दैट considers it as an enteral route. Okay, then again in the buccal route means what? Buccal route is nothing but it is a buccal pouch or pouch made from the cheeks and teeth. cheeks और teeth के बीच में जो empty space है उसको बोलेंगे buccal pouch. So when you are keeping a drug in buccal pouch, so that is also under
enteral route, right? Now these are the enteral routes. Now those routes which are not involved intestine, or those routes where intestine is not involved, that is known as the parenteral routes. Parenteral routes. So what are the parenteral routes? These are the parenteral routes. Like para means other than, and enteral means internal. Internal means intestine. So parenteral means other than intestine. So in that you have different kind of injections. In the you have intravenous injection, then intramuscular injection. Injection is given in the directly into the superficial vein. Intramuscular injection in the skeletal muscles. So skeletal muscle like gluteus muscle, then okay, gluteus muscle means आपका जो वेस्ट बोलते हैं जिसको अपन कंबर जो बोलते हैं वहाँ पे ग्लूटस मसल होता है. सो इन दैट मसल डेल्टोइड मसल कहाँ होता है? डेल्टोइड मसल इज प्रेजेंट इन द आर्म. आपका जो हाथ होता है वहाँ पे डेल्टोइड. कोरोना का कोरोना वायरस का वैक्सीन जो है वो डेल्टोइड मसल में दिया जाता है. सो इंट्रामस्कुलर subcutaneous means below the skin in the subcutaneous tissue. Intradermal means in the layers of skin. Intra-arterial मतलब in the artery. Intrathecal means in the in the spinal cord. Subarachnoid space. Now these are the different type of injection known as the parenteral. Okay. Again, third other route. Third route is nothing but the other route. Okay. Other route. For example, inhalation. So drug is inhaled in the form of powder, in the form of spray through a nose. So whatever drug is inhaled that goes into your bronchi, that may exert a local effect in the bronchi, and most of the time it is a systemic route. So it is absorbed through intestinal mucosa. So inhalation is under systemic only, sometimes local also. So both local as well as systemic. Question आ सकता है कि which route is which which route of autovalidization exert both systemic as well as local action. So यहाँ पे intra inhalation route. So inhalation route exert systemic as well as local action, right? Again, this rectal route also exert systemic as well as local action, right? Systemic as well as local action. So in inhalation and rectal both are the systemic as well as local, right? So आप बोलेंगे सर रेक्टल कैसे लोकल हो गए? बिकॉज रेक्टल बिकॉज अगर सपोजिटरी आपने दिया है, इफ यू आर यूजिंग इंडोमिथाइलिन सपोजिटरी, सो दैट इज यूज्ड फॉर द इंफ्लेमेशन एंड पाइल्स. अगर पाइल्स है वहाँ पे तो रेक्टम में टू reduce the swelling and inflammation you are using indomethacin suppository. Suppose you are using diazepam suppository in case of epilepsy. So that is that drugs that goes into systemic circulation. So at that time it is a systemic route. Now local, local as well as systemic, right? Now there are certain other like inhalation route, intranasal route. Intranasal route, say most of the time जो steroid हार्मोन होते हैं they are given by intranasal route. जैसे आपका ऑक्सीटोसिन हो गया, ठीक है. Some drugs are also given intranasally, right? जैसे साल्बिटामोल हो गया या फिर nasal drops होते हैं ना, so that exert a local action. So it is local as well as systemic again, as well intranasal route. Right? Then there are topical route, topical or local route of administration. So in this drug is not being absorbed into the blood. It may absorb, but that depends on the physicochemical properties of drug. अगर ड्रग बहुत ही ज़्यादा लिपिड सोल्यूबल है तो अगर आपके स्किन के ऊपर भी अप्लाई किया तो वो एब्सॉर्ब होगा बॉडी में. जैसे फॉर एग्जांपल पेस्टिसाइड्स, दे आर वेरी हाईली लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स. डीडीटी और मेलाथायोन, पैराथायोन, जो आप पेस्टिसाइड्स जो होते हैं स्प्रे करते हो क्रॉप के ऊपर to prevent the pest, to prevent the, they are known as organophosphorus compounds and they are highly lipid soluble. Even sometimes just by spraying, होता है ना कि जैसे फार्मर है कोई, वो स्प्रे करता है क्रॉप के ऊपर पेस्टिसाइड, अगर बाय चांस विंड उसकी तरफ आ रहा है तो बाय चांस वो स्प्रे उसके शरीर पे आ जाता है एंड उसको टॉक्सिटी हो जाएगी. सो दीज आर नोन एज सो दैट डिपेंड्स ऑन द फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग. कोई ड्रग अगर लोकली अप्लाई किया है तो वो ब्लड में भी जा सकता है, दैट मे एक्सर्ट सिस्टमिक एक्शन. दैट डिपेंड्स ऑन द फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज. जैसे एग्जांपल बोला है मैंने पेस्टिसाइड्स, तो पेस्टिसाइड जो होता है दे आर वेरी हाईली लिपिड सोल्यूबल एंड अगर स्किन के ऊपर आ गए तो वो आपके ब्लड में भी जाता है. जैसे डीडीटी हो गया, मेलाथायोन, पैराथायोन,
मेलोथोयान जो भी जो भी आपके पेस्टिसाइड्स होते हैं, but topical or local means only local action. So if you are using any cream, if you are using any ointment, or if you are using applying any cream ointment on a skin for local antiseptic action, so that comes under the local action. Local to the deep tissue, you are using balm like tiger balm, jandu balm, right? So you are using that locally, but you are applying locally but by rubbing, so that goes into deep tissue. So local action to the deep tissue. Now local to the joint, local to the joint. So in local to the joint means suppose you are suffering from any arthritis, arthritis हो गया आपको joint पेन है, so in that case, so local ointments are used, steroidal ointment, okay, local. Now if you are injecting drug to into joints, अगर joints में आप injection दे रहे हो उसको बोलेंगे intra articular route, intra articular route. So for example, prednisolone injection is given in case of rheumatoid arthritis or gout. So when injection is directly given into the joints, known as the intra-articular injection, right? बहुत सारे ये आर्टेरियल वेगड़ा, आर्टेरियल मतलब आर्टरी में, इंट्रा आर्टिकुलर मतलब जॉइंट्स में, ठीक है. और एक इंजेक्शन होता है इंट्रा पेरिटोनियल. तो आपका जो स्टमक एरिया है, सो वट एवर स्टमक एरिया इज देयर, so that all your vital organs, they are enclosed in a one sac known as a peritoneum, and injection which is given into the peritoneum known as the intraperitoneal injection, and most of the time it is given in case of children's, बच्चों में दिया जाता है. So intraperitoneal fluids also used for dialysis, etc., etc. तो वो है. We are going to see these route of administration one by one in the detail. Okay, so again route of administration, they are classified mainly, so a lot of books have gone different classification. So systemic route of administration, in that you have different type of, first one is nothing but the oral. In that you are using tablet, capsule, suspension, emulsion, or whatever tablets, film coated, okay, like that. So each and every route has its own advantages and disadvantages, okay. So that is not required for your GPAT, but only important points, so which are required for your GPAT and NIPER exam. So I am going to cover that one. So in the oral, tablet, capsule, whatever process form you can use. In the buccal, you are using okay, GTN, nitroglycerin. By using rectal route, you can give either enema. Enema means administration of drug in a solution form into a rectum. That is known as enema. Enema are of two type. एक टाइप होता है इनेमा का, that is known as evacuant enema. क्या होता है evacuant enema? मतलब that is used for the evacuation of bowel. अगर आप constipation आपका है, अगर आपको बाथरूम नहीं हो रहा है, so in that condition evacuant enema is used. Evacuant enema is also used in case of to remove the feces before surgery. अगर आपका कोई सर्जरी है तो वो जो फीसेस है आपको निकलने के लिए evacuant enema, जैसे फॉर एग्जांपल जस्ट 200 ml of soap water and soap water solution of 200 ml placed, or that is introduced into your rectum. So such kind of enema is nothing but the evacuant enema. Second one is nothing but the retention enema. एक होता है evacuant enema और दूसरा दूसरा होता है retention enema. रिटेंशन इनिमा मतलब क्या है, रिटेंशन इनिमा मतलब क्या है, तो ये रिटेन करेगा वो ड्रग वहाँ पे. सो ओनली 50 to 100 ml drug solution is introduced into your rectum, right, and alluded to, and drug from that rectal area will be absorbed into systemic circulation. For example, पैराल्डिहाइड इनिमा, पैराल्डिहाइड का ड्रग नाम है उसका, पैराल्डिहाइड ड्रग है वो, उसका इनिमा देंगे किसमें, in the treatment of epilepsy. Okay, so enema भी दो type का होता है, retention enema and evacuant enema. Okay, so I have not written over here, but you should remember there are two type of enema, retention enema and evacuant. So by using rectal route, you also can give your suppositories and also rectal tablets. Then intramuscular injection, you are injecting the drug into muscles, right? Intravenous injection, you are injecting drug directly into a veins. Intra arterial injection means you are injecting drug into arteries for
for a serious condition like neostigmine. Subcutaneous means you are injecting drug into subcutaneous tissue. So most commonly insulin is given, then BCG vaccine is given by subcutaneous routes. Then local routes. What is the main aim? To see that drug remains confined to a limited area and exert action in a limited area, right? So in that you have transmucosal route. कभी कभी इसको transmucosal बोलते हैं और transmucosal route और mucosal में है इसको transmucosal बोलते हैं कभी. So in that you have for example mouthwash, mouthwash. आपका rectal route भी कभी कभी transmucosal as a treat किया जाता है. Locally on a surface like ointment, creams, etc. Locally to the deep tissue, intra-articular. Then inhalation. So I told you inhalation comes under both systemic as well as local. Now we'll see one by one. So intranasal spray. First one is nothing but nasal spray or intranasal spray. In a solution or fine powder of drug is introduced into your nose. So that may go into directly into systemic circulation. Systemic circulation may जाएगा. So it is a systemic route. And there is nothing but the oral route. So orally you are taking tablet. So that tablet will go. The second one is subliminal. Subliminal route. Okay, subliminal route. The subliminal route you are placing tablet below the tongue. यहाँ पे जीभ के नीचे आपने tablet रख दिया. So whatever capillaries are there below the tongue, that will drug will go into the systemic circulation depending upon the physicochemical properties of drug, and that will be directly go into systemic circulation, right? Third one is nothing but the oral route. Oral route. Whatever tablet capsule you are taking by oral, so that will go into your stomach first. It will break down, it will disintegrate, and then from the intestinal area, stomach area, it is being absorbed into systemic circulation. यहाँ पे सब कैपिलरी सर्कुलेशन में absorb हुआ. So that is oral route. Now inhalation route, ये lungs में जब जाता है inhalation में lungs में जाएगा. When you inhale something, that will go into the bronchi and lungs, and that is supplied with the blood capillaries. So there is a diffusion of drug from lungs to blood. Okay? So इसका ऊपर एक बहुत मेजर एडवर्स पेपर है. So एक क्वेश्चन भी आ चुका है. So which route of administration is mainly associated with the cardiac toxicity? So route of administration is inhalation route. Inhalation जो भी आपने inhale किया वो कहाँ पे जाएगा? लंग्स में जाएगा. लंग्स में जो गया वहां से वो ब्लड में जाता है. ब्लड कहाँ पे आता है? लंग्स से डायरेक्टली ब्लड कहाँ पे आता है? लेफ्ट एट्रियम में आता है. So blood from lungs that is come to left atrium and it can produce cardiac toxicity. Question आ चुका है देखो. Which route of administration will or it is prone to cardiac toxicity? So inhalation route is prone to cardiac toxicity because whatever inhalation route is there, whatever drug you are inhaling, so that drug goes to your lungs and from lungs it is diffused into systemic circulation. ब्लड में जाएगा. ब्लड लंग से कहा जाता है ब्लड लंग से जाता है ब्लड हार्ट में. कहाँ पे? लेफ्ट ऑरिकल में. उससे बाद में लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा. उसमें पूरा बॉडी में जाएगा. सो when drug is given by inhalation route, it produces maximum cardiac toxicity. अब आपको याद रखना है maximum cardiac toxicity is related with the inhalation route of administration. अगेन वो डिपेंड करता है, मतलब अगर ड्रग कार्डियोटॉक्सिक है तो ओरली भी वो कार्डियोटॉक्सिक है. मैक्सिमम इनहेलेशन से. ठीक है. Now inhalation, when you are giving route a drug by inhalation, first pass metabolism is bypassed. Now when you are giving drug by oral route, what will happen? There might be first pass. जैसे orally drug ले लिया आपने, orally यहाँ से drug आएगा आपके स्टमक में जाएगा. स्टमक में से मैक्सिमम जो ब्लड है देखो यहाँ पे कहाँ पे जा रहा है ब्लड? लिवर को. So if there is a metabolism of partly metabolism of drug, that is known as the first pass metabolism. Oral, that is the maximum with the oral route, right? And now intramuscular, you are injecting a drug into a muscle, skeletal muscle. ठीक है. स्मूथ मसल नहीं, skeletal muscle तो बोलेंगे. This one is known as the gluteus muscle. So that is directly drug, you are placing drug directly into again systemic circulation. क्योंकि यहाँ पे क्या है कि मसल में डिफ्यूजन होगा ड्रग का and drug will be absorbed through a this lymphatic system and or capillaries that will go into again systemic circulation. Intravenous means you are injecting drug directly into the vein. You are putting drug directly into the systemic circulation. Now rectal route means this is rectal route.
suppository, tablet or enema. Now यहाँ पे एक थोड़ा सा you should remember whenever you are using rectal route, rectum is supplemented with the two kind of blood vessels. ये जो part है आपका ये क्या है rectum है. Now rectum is supplemented with two kind of blood vessels. This one is this. Okay. This one is known as a superior hemorrhoidal vein. Wait, superior hemorrhoidal vein. Yes, superior hemorrhoidal vein. And this one is known as inferior hemorrhoidal vein. Inferior hemorrhoidal. Superior hemorrhoidal vein जो है that carries whatever absorbed from the rectal route that is carried to a whatever absorption takes place through a rectum via superior hemorrhoidal vein that will undergo first pass metabolism. Now, whatever absorption takes place through a inferior hemorrhoidal vein that is directly conveyed to your systemic circulation. So first pass effect can be avoided by rectal route. Rectal route से first pass effect avoid किया जा सकता है, but suppository should be or tablet should be below the hemorrhoidal vein. अगर नीचे ही रखा है ज़्यादा टैबलेट तो डायरेक्टली एब्सॉर्प्शन होके ड्रग जाएगा ब्लड में, ठीक है. या फिर अगर आपने थोड़ा डीप इंसर्ट किया so most of the blood will be absorbed by this superior hemorrhoidal vein and that will go into the liver which will show first pass effect. So first pass effect can be minimized by rectal route also by this inhalation route. I will see one by one again. The first one is nothing but the oral route. Okay, so I'm not going to explain you regarding the advantages, disadvantages. वो बहुत सारा है आपका पापड़ पसारा वो आप फिर आप इसमें देख लेना किसमें बुक में. That is important for your semester, not for GPAT. First one is nothing but the oral route or enteral route. So जैसे देख रहे हो ये जो मॉडल है ये देखो यहाँ पे ओरली टैबलेट ले रहे हैं. So major important advantage क्या है. So oral dose is the safe, convenient and economical. ठीक है, कोई भी ओरली ले सकता है, बच्चा भी खाने को समझता है, बच्चे को भी कैसे खाना है समझता है. It can take. So unit doses are there. It is safe, convenient and economical. So major disadvantage क्या है. The onset of action is tardy. Onset of action is tardy मतलब क्या है. टैबलेट जब लेंगे आप टैबलेट लेंगे उसके बाद में वो स्टमक में जाएगा, डिसइंटीग्रेट होगा, डिसोल्यूशन होगा, बाद में एब्सॉर्ब होगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन में आएगा और बाद में साइड ऑफ एक्शन पे जाएगा. इट विल टेक अ टाइम. सो इट विल टेक अराउंड 45 मिनट्स. कितना 45 मिनट्स. तो 45 मिनट्स लग जाएंगे आपके ड्रग का एक्शन दिखाने के लिए. सो अगेन दैट डिपेंड्स ऑन द फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग. अगर कोई ड्रग ज़्यादा लिपिड सोल्यूबल है तो वो जल्दी दिखाए. Disadvantage, one set of action is tardy. It will take time to show its pharmacological action. Now again, drug likely to be destroyed by gastric juices. जो stomach में आपका gastric juice है, HCl and other enzymes, okay, in the pancreas, in the duodenum also. Some drugs are destroyed by gastric juice. For example, if drug is of your hormonal hormonal drug है या फिर कोई peptide drug है, that is going to be destroyed by digestive juice. Again, main disadvantage is the first pass effect. So whatever absorption takes place through a kitchen area, stomach area and intestinal area, so most of the blood is directly conveyed to your liver. पहले liver को blood जाएगा और बाद में क्योंकि जो खाना खा रहे हो आप उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, शुगर्स, अमीनो एसिड्स, सॉल्ट्स वो सब होंगी. ठीक है, पहले आपका पेट क्या करेगा, उसको एब्सॉर्ब करेगा, सबको सब एब्सॉर्ब करेगा. पहले लीवर को भेजेगा, वहाँ पे लीवर को, यहाँ पे रहता है लीवर, बाद में वो से सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा. सो इट मे बी देयर आर चांसेस ऑफ गेटिंग मेटाबोलाइज्ड. ड्रग मे बी मेटाबोलाइज्ड ओवर द in the liver before reaching to systemic circulation or before showing its pharmacology. That is the first project we have seen in last session. To prevent this, to prevent the destruction of drug by gastric juices or through intestinal juices. Gastric juice HCl से कोई ड्रग, अगर कोई ड्रग है जो एसिड में स्टेबल नहीं है, to avoid that a tablet may be coated entry coating is done or film coating of tablet is done to avoid the to bypass the stomach. Entry coating में क्या है, so they are known, entry coating means these are the in that you use a polymer which are known as entry coating polymer or pH dependent polymers and they release the drug in the intestine. Intestine में क्या होता है कि basic pH होता है, आपके स्टमक में क्या है कि एसिड होता है. स्टमक का pH याद रखो, आपको लिखना है. सो स्टमक का pH होता है 1 to 3, 1 to 3 नहीं 1-3.
एक से लेके 3 तक pH होता है स्टमक का, बिकॉज इन दैट स्टमक यू हैव हाइड्रोक्लोरिक एसिड. दोज ड्रग विच आर नॉट स्टेबल इन द एसिड, तो एसिड में स्टेबल नहीं तो वो जाएगा वहाँ पे डिग्रेड होगा, फिर क्या फायदा उसका. सो दैट ड्रग विल बी डिग्रेडेड एंड इट इज यूजलेस. सो टू अवॉइड दैट, tablet is entry coated. So entry coating polymers, they will not release a drug in a in a stomach where there is acidic pH. So they will break down the tablet in the intestine. Now parenteral routes. Another route is the parenteral routes. A lot of advantages, disadvantages are there. You can बाकी फिर it is safe, convenient, easy to take. ये बाकी सब फालतू है, कुछ important नहीं. और next one is a parenteral. First one is inhalation. So inhalation, you are inhaling the solid powders, finely divided solid powders in case of asthma. जैसे ये भाई यहाँ पे ये जो लड़की है, ठीक है, तो ऐसे दिखने में बहुत सुंदर दिख रहा होगा आपको, एक अच्छी सी लड़की यहाँ पे इनहेल कर रही है. लेकिन अस्थमा जब आपको होता है तो ये कंडीशन इतना इजी नहीं है. आदमी पागल हो जाता है, मरने को तैयार होता है उस टाइम, बहुत बुरी कंडीशन होती है. ठीक है. सो इन दैट रोटोकैप्स आते हैं, capsules or rotocaps. Rotocaps means solid powder with capsule that is being absorbed. Powder is directly inhaled. Powder as well as suspension solution can be inhaled. Now, what are the advantages? So mostly drug is quickly absorbed to produce local as well as systemic action. अस्थमा है, ब्रोंकोडाइलेशन करना है, एक विद इन अ मिनट के अंदर आपको क्या होगा, रिलीफ मिल जाएगा. सो वन सेट ऑफ एक्शन इज वेरी क्विक. Onset of action is quick. Again, drug is absorbed very quickly and it can produce systemic as well as local effect both. Main disadvantage क्या है, जिसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, तो disadvantage. So it may produce cardiac toxicity. It may produce cardiac toxicity due to placement of drug directly into the left side of your heart. Because आप जो भी inhale कर रहे हो, whatever you are inhaling, so that is directly going to your lungs. And lungs में से क्या होता है कि diffusion होता है. लंग्स में ब्लड सप्लाई होता है ना, तो ब्लड लंग से प्यूरिफाई हो जाता है. सो ड्रग विल गो इनटू लंग, इट विल बी डिफ्यूज्ड इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड इट मे प्रोड्यूस कार्डियक टॉक्सिसिटी. बिकॉज जो लंग्स से ब्लड आता है वो कहाँ पे आता है, डायरेक्टली लेफ्ट साइड ऑफ योर हार्ट. हार्ट में लेफ्ट साइड में आता है, लेफ्ट साइड में ब्लड में आता है. सो इट मे प्रोड्यूस कार्डियक टॉक्सिसिटी. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. मेन डिसऑर्डर इज द इट मे प्रोड्यूस कार्डियक टॉक्सिसिटी बिकॉज you are placing drug directly into left side of your heart. Mostly which kind of drug are given by inhalation route? Mostly general anesthetic drugs. आपको अगर सर्जरी करना है कुछ, उसके पहले एनेस्थेसिया देते. अभी तो क्या है कि इंजेक्टेबल एनेस्थेटिक बहुत सारे अवेलेबल है. अब पहले जमाने में क्या था कि ईथर, देन क्लोरोफॉर्म, halothane, etc., etc. So inhalation anesthetics were popular, and at the time this anesthetic was used to induce the anesthesia. Again, anti-emetic drugs are also given by this inhalation route. There are certain there are certain hormones like this, hormones like oxytocin, growth hormone, calcitonin. They are also given by inhalation route. Now, next one is nothing but the, again, इंट्राडर्मल इंजेक्शन. पेरेंटल में आएगा आपका पहला इंट्राडर्मल इंजेक्शन. सो इंट्राडर्मल, देखो इंट्राडर्मल नाम में लिखा है डर्मल मतलब डर्मिस, डर्मिस मतलब लेयर ऑफ स्किन. सो इंजेक्शन इज गिवन इनटू लेयर ऑफ स्किन एंड यू नो दैट skin is very thin and you only can give small amount of injection. So only small quantity of drug can be injected, right? What is the injection volume? Up to 0.5 ml. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. So you can inject only 0.5 ml, 0.5 ml of injection through a intradermal route. Because dermis क्या है? Dermis means in the layers of skin. Intradermal मतलब in the layers of skin and only small volume, 0.5 ml, maximum 0.5 ml that can be injected. And mostly this route is used to check the sensitivity of drugs. इससे होता है कि एंटीबायोटिक्स है, जैसे पेनिसिलिन. देखिए पेनिसिलिन क्या करता है, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन प्रोड्यूस करता है. तो इट प्रोड्यूसेस एनाफाइलेक्सिस. अभी किसको करेगा किसको नहीं करेगा ये किसको नहीं मालूम, डॉक्टर को भी मालूम नहीं रहता है. तो डॉक्टर आल्सो कैन नॉट प्रेडिक्ट हु इज सेंसिटिव टू द पेनिसिलिन, हु इज नॉट, राइट. सो टू चेक बिफोर इंजेक्टिंग द पेनिसिलिन, अभी तो पेनिसिलिन यूज नहीं करते लेकिन पहले करते थे. पहले एंटीबायोटिक्स ज़्यादा नहीं थे तो वही करते. सो दे यूज टू इंजेक्ट penicillin in your skin, small amount or small dose of penicillin in the skin, and they used to check the whether
you are sensitive to the penicillin or not. आपका स्किन इंट्राडर्मल इंजेक्शन देंगे आपको 0.2 ml का, और अगर वो स्किन में अगर कोई इन्फ्लेमेशन हो गया, सूजन आ गया, रेडनेस हो गया, दैट मीन्स यू आर सेंसिटिव, तो इंजेक्शन आपको नहीं दे सकते, तो आपको नहीं देंगे, या फिर आपको विदाउट चेकिंग अगर इंजेक्शन दे दिया, so if before knowing the whether you are sensitive or not, so if he injected a penicillin, what will happen? You will suffer from anaphylaxis and you may die. So that's why to check the sensitivity of drugs, to check the sensitivity of vaccines, BCG vaccine. Now second we'll see next subcutaneous route. Subcutaneous मतलब क्या? Below the skin. Subcutaneous means below the skin. So injection is given below the only non-irritant type of drug that can be injected. What is the volume of injection? Up to 2 ml. Maximum 2 ml injection can be given by subcutaneous. ये वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं. 2 ml. It is a common site for or a common route for injection of insulin. Subcutaneous implant. Then depot preparation. Depot मतलब ये preparation जो होता है depot preparation. So they will release the drug for longer period. एक बार ये depot preparation they will release the drug for longer period. So in case of steroidal hormone, so progesterone हो गया, estradiol हो गया, so उनकी depot preparations available होती है. So very common route for insulin injection. So जिसको डायबिटीज है, देखो वो अगर वो इंसुलिन के ऊपर है, मतलब लेट स्टेज ऑफ डायबिटीज बहुत ज़्यादा है, उसका डायबिटीज शुगर लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन इज नथिंग बट द इट इज अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय बीटा सेल्स ऑफ लैंगरेंस. अभी लिख लो, इट प्रोड्यूस्ड बाय बीटा सेल्स ऑफ लैंगरेंस बाय द पैंक्रिया. पैंक्रिया जो होता है आपका, उसमें डिफरेंट टाइप के सेल होते हैं, जैसे अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल एंड पीपी सेल. ठीक है, तो अल्फा, तो पैंक्रियाज विल हैव दीज काइंड ऑफ सेल्स. पैंक्रिया में इतने सारे सेल होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल एंड पीपी सेल. सो अल्फा सेल दे विल प्रोड्यूस वन हार्मोन नोन एज द ग्लूकागॉन. ये क्या करेंगे, ग्लूकागॉन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे, राइट. बीटा सेल विल प्रोड्यूस इंसुलिन. ठीक है, यहाँ पे दिख नहीं रहा आपको अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख लो इंसुलिन. बीटा सेल विल प्रोड्यूस इंसुलिन. डेल्टा सेल विल प्रोड्यूस सोमेटोस्टैटिन, इट विल प्रोड्यूस सोमेटोस्टैटिन, एंड पीपी सेल विल प्रोड्यूस पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड. ठीक है, ये आपको लिख के रखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन आता है उसके. ये अभी ये बाद में भी आएगा, when we'll see drug used in the treatment of diabetes, anti-diabetic drug जब आएगा, so at that time also I will say. Please mute yourself. SOP दिया है मैंने, SOP में लिखा है म्यूट करके रखना है. अल्फा सेल्स they will produce glucagon hormone, beta cell will produce insulin, delta cell will produce somatostatin, and PP cell will produce pancreatic polypeptide, right? So subcutaneous route is very common for insulin injection. So it is a common route for insulin, and आपको बुक दिया ना ऑलरेडी, पूरा बुक दिया है आपको, सब कुछ है. बस ये ऐसे इमेजेस वगैरह नहीं रहेंगे बुक में, क्योंकि इमेजेस का कॉपीराइट रहता है आपका. ठीक है, देख लो उसको, स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर जो एडिशनल मुझे लगता है कि ये बुक में नहीं, तो वो कंटेंट में शेयर करता हूँ आपको. नाउ विल सी द नेक्स्ट. प्लीज म्यूट योरसेल्फ. नेक्स्ट वन इज intramuscular route. Next one is intramuscular route. Injection is given in the muscles, skeletal muscles. कौन से muscles? Skeletal muscles. Because there are two types of muscles, skeletal muscles and smooth muscles. So intramuscular injection is given in the skeletal muscle. Mild irritant और थोड़ा सा mild irritant suspension colloids can be injected. Suspension also be given by this route. Suspension भी देना. Volume of injection not more than 10 ml. Volume of injection important, not more than 10 ml. 2 ml, 1 ml, 5 ml, 7 ml injection is not more than 10 ml. That is given by intramuscular route. And you have to ensure that, आपको क्या देखना है, you have to ensure that needle is not near to the vein, needle is not near to the nerve. Oily injection है, that is a painful injection. If you are injecting नियर टू द नर्व के पास में अगर इंजेक्शन देंगे मसल में, तो पेन होगा. ठीक है, देखो कभी कभी इंजेक्शन दिया होगा अपने बचपन में, आपको मालूम होगा कुछ डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया तो आपको लगता भी नहीं कि इंजेक्ट किया है. कोई डॉक्टर का बहुत ही इंजेक्शन देने के बाद बहुत ही दर्द होता है. क्यों? बिकॉज समटाइम्स इफ दैट पर्टिकुलर पेशेंट डोंट हैव प्रैक्टिस, व्हाट विल ही डू, ही विल इंजेक्ट समवेयर इन द मसल. इफ ही इंजेक्ट नियर टू द नर्व, so what will happen, you will have local pain and necrosis.
दैट इज नथिंग बट द आपको दर्द होता है. So remember, mild irritant solutions, suspensions, oily injections can be given. Okay, volume of injection should not be more than 10 ml. What are the sites sites for injection? Intramuscular sites for injection. First one is deltoid muscle. आपका कंधे का मसल होता है. This is known as the deltoid muscle. Okay. So it is the most commonly used because most of the absorption is a very rapid from deltoid muscle. सबसे ज़्यादा absorption इंट्रामस्कुलर से तो deltoid muscle से. तो याद रखना है deltoid muscle. Then next one is a gluteal muscle. Okay, next one is a ventrogluteal. Means gluteal muscle. कमर में इंजेक्शन देते हैं आपको. ठीक है. That is in a in a gluteus muscle. In a gluteus muscle. First one is a very common. पहला वाला जो होता है वो कॉमन होता है. दूसरा वाला जो है वो भी कॉमन होता है. Ventrogluteal. Now another muscle for injection. That is a dorsogluteal. So होता है dorsogluteal. Ventro and dorsogluteal. Another muscle for injection is a rectus femoris. Vertus lateralis or rectus femoris. उतना याद होगा. Rectus femoris. So that femur, okay, this muscle. अभी ये कब देते हैं? Injection is given in the rectus femoris in the children's only. जो बच्चे होते हैं उसमें ही देते हैं. So in the children's only, this rectus femoris is chosen for the intramuscular injection. क्यों? Because in the children's the gluteal muscle is not developed. Gluteal muscle जो है ना वो उनमें डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं होता है. क्यों? क्योंकि अभी बच्चा है, वो अभी चलना फिरना नहीं सीखा. जब चलेगा दौड़ेगा तब उसका ग्लूटियल मसल क्या होगा? डेवलप होगा. ठीक है. ग्लूटियल मसल डेवलप नहीं होता है बच्चे का जल्दी. मतलब जब वो चलते फिरता है तब उसके बाद में डेवलप होता है. सो that's why to avoid the damage to the muscle, this rectus femoris is the route, intramuscular route for the injection in the children's. बच्चों में rectus femoris में इंजेक्शन देते हैं. मतलब मांडी में जो मांडी रहती है उसका जो थाई थाई रहता है, थाई में इंजेक्शन देंगे उसका. बिकॉज उसका ग्लूटियल मसल डेवलप नहीं होता है. एंड टू अवॉइड द डैमेज टू द ग्लूटियल मसल, so in the children's injection is given in the rectus femoris. Okay, intramuscular injection. Now we'll see the next one. Next one is the intravenous injection. Intravenous injection. So injection of drug is directly given into the veins. आपका जो veins होता है superficial veins. So injection is directly given to the vein. यहाँ पे आपको needle डाल के injection देगा. Intravenous. When drug is given by intravenous route, so you are putting drug directly into systemic circulation. आप कहाँ drug directly systemic circulation में. So 100% bioavailability. Question आ चुका है. 100% bioavailability is by intravenous route. याद रखना है आपको. Intravenous. When drug is given by intravenous route, 100% bioavailability is there, right? 100% bio. Intravenous. Second point important. Large quantity of fluids can be administered. Large quantity of fluids can be administered. Again, this was a question in the GPAT exam. Question कुछ ऐसा था. देखो आपको थोड़ा सा सोचना भी पड़ता है, लॉजिक भी लगाना पड़ता है. तो फिर आप बोलेंगे सर आपने यहाँ पे लिखा है लार्ज क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड्स कैन बी एडमिनिस्टर्ड बस बाय इंटरनल रूट. तो इसके ऊपर तो क्वेश्चन नहीं आया. बॉस क्वेश्चन कैसा आता है? सेवरल लीटर्स ऑफ फ्लूइड, ऐसा क्वेश्चन आता है. जीपैट 2021. several liters of fluid that can be administered by following route of administration. These several liters of fluid can be administered by intravenous route. कैसे? जैसे मान लीजिए आप कोई आपका बीमार है, आईसीयू में है कोई रिश्तेदार, या आपको बीमार करने की मुझे इच्छा नहीं है इसलिए मैं आपको नहीं कर रहा हूँ, आपके रिश्तेदार को कर रहा हूँ. ठीक है. सो इफ योर रिलेटिव इज इल एंड इफ ही इज हैविंग सम कंडीशन, ही इज एडमिटेड इन द आईसीयू. एक बार उसको आईसीयू में गया ना, आईसीयू में आपको मालूम नहीं क्या होता. एक बार आईसीयू में गए, एक बार यहाँ पे क्या करते, इंट्राकैट डालते. क्या है इंट्राकैट? मतलब कैनुला, वेनस कैनुला. इंट्राकैट लगा दिया एक बार, तो फिर क्या करते वहाँ पे इसको एक नॉब रहता है, उसको दूसरा सलाइन हो गया, तीसरा सलाइन, तीसरा हुआ है तो चौथा. मतलब दिन में 3-4 बार बॉटल चढ़ती जाते उसको. डेक्सट्रोस D5 या फिर NS D25% या फिर कोई भी जो भी उसको इंजेक्ट करते रहते हैं, उसको यहाँ पे चलते रहते हैं. So several liters of drug that can be, several liters of fluids can be administered by intravenous route. You have to remember several liters of fluid. Question आ चुका है. Okay. Now once drug is given by intravenous route, you cannot withdraw that. एक बार अगर आपने इंजेक्शन दे दिया तो ड्रग का आ जाएगा
आपके वेन में जाएगा, ड्रग क्या जाएगा आपके वेन में जाएगा, ठीक है। तो आप उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट प्रिवेंट दैट एक्शन। एक बार अंदर गया तो बाहर नहीं निकल सकते। देयर इज ओनली वे टू रिमूव दैट ड्रग इज नथिंग बट द डायलिसिस। अगर आपने डायलिसिस किया तो ही वो ड्रग जाएगी, तो नहीं जाएगी। सो ओनली वंस ड्रग इज गिवन इट कैन नॉट बी अल्टेड। देन अगेन लोकल इरिटेशन एंड थ्रोम्बोफ्लेबिटिस। लोकल इरिटेशन एंड थ्रोम्बोफ्लेबिटिस, इसके ऊपर क्वेश्चन आया जीपैट 2019 में। क्वेश्चन क्या था देखो, लोकल इरिटेशन एंड फ्लेबिटिस ऑफ वेन। सो अगर आप में आईसीयू में गए तो एक बार कैनुला, मैंने जैसे बोला एक बार यहाँ पे इंट्राकैथ लगा देगा वो, और उसके ऊपर सलाइन चढ़ा दे जाएगा, ठीक है। एक दो दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, अगर आप पहले दिन गए आईसीयू में लगा दिया सलाइन, और दूसरे दिन भी एक दो दिन में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बिकॉज ऑफ दैट इंसर्टेड नीडल इन द वेन, जो वेन में नीडल आता है आपका, तो वेन इज रप्चर्ड, ठीक है। पहले एक या दो दिन में कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन बाद में क्या होता है, वहाँ पे प्लेटलेट जमा हो जाते हैं, प्लेटलेट adheres to the that damaged blood vessels, right? Now because of that damage there is a inflammation, swelling, and due to aggregation of platelet there is thrombus formation. So what happens, so if you not rotate this site of injection frequently, so what will happen, next time जब इंजेक्शन देने जाओगे आप, यहाँ पे ऑलरेडी क्या थ्रोम्बस बना है, वो डिसलॉस हो जाएगा। डिसलॉस हो जाएगा तो वहाँ पे इतना ज़्यादा पेन होगा आपको। सो दैट इज नथिंग बट थ्रोम्बोफ्लेबिटिस। सो लोकल इरिटेशन एंड फ्लेबिटिस ऑफ वेन दैट ऑकर्स इन द इंट्रावेनस इंजेक्शन। क्वेश्चन ऐसा था जीपैट में, थ्रोम्बोफ्लेबिटिस इज अ प्रॉब्लम associated with the following route of administration, दैट इज इंट्रावेनस। ऐसा नहीं वो आपने तो फिर बोलेंगे सर आपने, तो थ्रोम्बोफ्लेबिटिस याद रखो, थ्रोम्बोफ्लेबिटिस इज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ, और थ्रोम्बोफ्लेबिटिस इज अ प्रॉब्लम विद द इंट्रावेनस इंजेक्शन। यहाँ से आगे थ्रोम्बो लगा दो, थ्रोम्बोफ्लेबिटिस, लोकल इरिटेशन एंड फ्लेबिटिस और थ्रोम्बोफ्लेबिटिस। इफ यू वांट टू गिव इंट्रावेनस इंजेक्शन यू नीड अ स्पेशल ट्रेनिंग। ऐसा नहीं कि कोई भी मुंह उठा के जाके इंट्रावेनस इंजेक्शन दे सकता है, ठीक है। सो इंट्रावेनस इंजेक्शन देने के लिए आपको प्रॉपरली प्रैक्टिस चाहिए, ट्रेन चाहिए। So special training is required for intravenous administration. And intravenous site should be rotated at a regular interval, because if you not rotate the intravenous, अगर आप एक महीने में एडमिट हो, एक महीने तक, और आपने वहीं पे कैनुला लगा के रखा है, वहाँ पे थ्रोम्बोफ्लेबिटिस हो जाएगा, तो आपको 2-4 दिन में यू हैव टू रोटेट द इंटरवेनस साइट। अब देखो हॉस्पिटल में क्या है, एक बार यहाँ पे लगेंगे, दूसरी बार दूसरी जगह पे लगेंगे, ठीक है। 2-4 दिन के बाद वहाँ से निकल के दूसरी जगह पे लगेंगे। So because they used to rotate the intravenous sites to avoid the inflammation and thrombophlebitis, right? So ये question आ चुके हैं, याद रखो आप। Now what are the sites? Radial vein. So most common site is the radial vein. This is the radial vein. Radial vein है, that is the most common site for intravenous injection. Intravenous injection mostly radial vein में ही देते हैं. Radial vein is most common. Then another is a cephalic vein and another one is a median cubital। तो कभी कभी देखो आप, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यहाँ पे इंजेक्शन लगाएंगे, कभी कभी इधर लगाते हैं, फिर कभी कभी ये मेन वाला जो वेन है मीडियन क्यूबाइडल वेन यहाँ पे लगाते हैं। नाउ नेक्स्ट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज नथिंग बट द इंट्राथिकल। इंट्राथिकल मीन्स you have to inject drug solution in the subarachnoid space of your spinal cord। ये देखो ये पूरा मदहोश था, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। और सेकंड रूट, सेकंड इज नथिंग बट द इंट्राथिकल एडमिनिस्ट्रेशन, इंट्राथिकल रूट, ठीक है। सो यू आर इंजेक्टिंग ए ड्रग इनटू ए subarachnoid space of spinal cord। तो जो स्पाइनल कॉर्ड होता है subarachnoid space, this is known as subarachnoid space, spinal cord जो है आपका। So by using a lumbar puncture technique, by using a lumbar puncture technique, you are injecting a drug into the subarachnoid space of spinal cord, and you need a very big size needle known as a lumbar puncture needle, or known as a lumbar, known as a spinal needle। इसको spinal needle बोलते हैं। कितना बड़ा वाला needle देखो, कितना बड़ा needle है। So it is a spinal needle। So which kind of drug is given? First of all you have to exercise only strict aseptic condition। यहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन अगर हो गया तो उसको मेनिंजाइटिस हो जाएगा। सो स्ट्रिक्ट aseptic condition you have to follow, strict aseptic condition you have to follow, okay? Now drug is directly active on a CNS. Most of the general anesthetics they are given by this spinal route,
So spinal anesthesia is very common in the ladies, gynecology and obstetrics. Now this route is also used to withdraw CSF, cerebrospinal fluid. So that there is a fluid which circulate in the spinal cord. That for examination, for diagnostic purpose, sometimes you have to withdraw this cerebrospinal fluid. Now this technique by using lumbar puncture needle or by using this spinal needle. Right? So you are also withdrawing this CSF for examination, for diagnosis. ठीक है, अगर कोई meningitis हो गया है, कोई encephalitis हो गया, उस टाइम पे ये CSF विड्रॉ करते हैं. जैसे अगर कोई ब्रेन ट्यूमर है तो CSF विड्रॉ करेंगे, देखेंगे. Only what is the volume of injection up to 15 ml. Up to 15 ml injection can be given by intrathecal route. बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे नहीं रहते, मैं बोलता हूँ. Again, one more important requisite for intrathecal injection. कौन सा है? The solution should be isotonic. Solution should be isobaric. So whatever solution you are injecting in the spinal cord, that solution should have osmotic pressure as that of the CSF, cerebrospinal fluid. CSF जो होता है cerebrospinal fluid. Whatever injection you are giving by intrathecal route, that injection or that solution should be isobaric with the CSF. Should have same osmotic pressure with the CSF. And only 15 ml can be given. But there is one major drawback. What is that? Risk of meningitis. अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो गया तो इन्फेक्शन डायरेक्टली कहा जाएगा न्यूरल ट्यूब में, ये ब्रेन वाला जो पार्ट है. सो व्हाट विल हैपन? रिस्क ऑफ मेनिंजाइटिस. एंड दिस रूट इज मोस्टली यूज्ड फॉर स्पाइनल एनेस्थीसिया. मतलब यहाँ पे मैंने 4 लाइन लिखी है, लेकिन आपको बोला है 10-20 लाइन. इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको लिखना चाहिए. सब कुछ मैं ही करूँगा तो आप क्या करोगे? नाउ नेक्स्ट वन इज ट्रांसक्यूटेनियस. ट्रांसक्यूटेनियस मतलब क्या है? बियॉन्ड द स्किन, आपके स्किन के नीचे. ट्रांसक्यूटेनियस मतलब स्किन के नीचे रखना है. ट्रांसक्यूटेनियस मतलब स्किन के उस साइड में, मतलब अंदर तक भी जा सकता है. कि ट्रांसक्यूटेनियस. So in that you have iron 2 process. You have iron 2. So in this, a solution of your drug is propelled or it is allowed to penetrate your skin by using a galvanic current. Say anode and cathode iron 2 process are there. Anode and cathode iron 2 process are there. Galvanic current is allowed to penetrate the drug through a skin. Anode and cathode iron 2 process, and it is used for giving different kind of charge drug. जैसे आपका ड्रग अगर निगेटिवली चार्ज है तो आयन टू प्रोसेस में एनोड आयन टू प्रोसेस कैन बी यूज्ड. निगेटिवली चार्ज है, सो व्हाट हैपन, जैसे आप मैग्नेट लेते हो, जैसे अगर दोनों भी पोल सेम है तो क्या होगा? वहां पे रिपल्शन होता है. सो एनोड आयन टू प्रोसेस मींस negative charge will repel a negatively charged molecule through a force and which will penetrate your skin. Likewise, that cathode ion process is only therefore positively charged drug. Okay. Now next one is dermojet injection. Introduction of drug into transcutaneous by means of high velocity jet produced through microorifice. ऐसे इंजेक्शन होता है, like it is type of transcutaneous. Then नेक्स्ट होता है ट्रांसम्यूकोजल रूट. ट्रांसम्यूकोजल में आपको बहुत सारा है, मतलब आपका रेक्टल रूट भी ट्रांसम्यूकोजल में कभी आ जाता है. बट मेनली ट्रांसम्यूकोजल रूट इज नथिंग बट द सबल्यूमिनल रूट. सो व्हाट इज दैट? यू आर प्लेसिंग ए टैबलेट बिलो द टैबलेट इज प्लेस्ड बिलो द टंग. जैसे ये देखो, ये मोहतरमा ने यहाँ पे जीभ के नीचे टैबलेट रख दिए. सो व्हाट एवर द कैपिलरीज नेटवर्क आर देयर, यहाँ पे जो ब्लड वेसल के कैपिलरीज होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस ड्रग इज और द active drug is directly absorbed into systemic circulation and this will not go into intestine and that's why first pass effect is avoided. Again rapid onset of action कितना होता है? 3 to 5 minutes. So in a 3 to 5 minute drug will show its action and this route is mostly used for the nitroglycerin tablet in the treatment of angina pectoris, in the relieving the pain of angina. So in the transmucosal route, sublingual route. Okay, first pass if it is avoided, that is an important point. यहाँ पे इसके precaution आता है rapid onset of action.
3 से लेके 5 मिनट में आपको उसका इफेक्ट दिखेगा। एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर नाइट्रोग्लिसराइड टू रिलीव द पेन ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, जैसे आप अनजाने लोगों से दिल लगाते थे तो उसके बाद में फिर आपको दिल में प्रॉब्लम आ जाता है, इट इज अनजाने। मतलब वो क्या होता है कि इफ देयर इज अ लेस ब्लड सप्लाई टू योर हार्ट ड्यू टू सम रीजन, रीजन क्या है, सो इफ देयर इज अ नैरोइंग ऑफ योर coronary artery, if there is a blockage in your coronary artery, so it will supply less blood to your heart, so demand and supply will be disturbed. So if there is a less demand as compared to more supply, so you are suffer from angina pectoris. In that condition you have to dilate their coronary blood vessel, and this nitroglycerin is nothing but the coronary blood vessel dilate. That is angina pectoris. So when we'll see drug acting on cardiovascular system, at the time I will explain you what do you mean by antiarrhythmic drug, what are the different antiarrhythmic drug, anti-anginal drug, antihypertensive. So if you want to give intramuscular injection, the angle between needle and muscle should be of 90 डिग्री सेल्सियस। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जब देते तो एंगल कितना होना चाहिए बॉस, 90 डिग्री का। ठीक है, 90 का क्वेश्चन आ चुका है फार्मासिस्ट में। व्हेन यू आर गिविंग इंजेक्शन known as subcutaneous injection, so angle between needle, tip of needle and your skin should be 45 degree, 45 degree angle होना चाहिए। when you are using when you are giving injection through intravenous route, the angle between needle tip and your skin should be 25 degrees Celsius. And when you are giving injection by intradermal route, so angle between the tip of needle and skin, that is a 10 to 15 degrees, 10 to 15 degrees.